Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fit and healthy at your home with your nears and dears. Today our topic is An Evening Wet with Rain, written by Vedpal Deep. In this poem, first of all, I will tell you a few words about the poet Vedpal Deep. Vedpal Deep is born in 1929 and died in 1995. He's a Togri writer. Now, directly, I am going to read the texts of this poem. First of all, I want to say something about the introduction of this poem, that is An Evening Wet with Rain, written by Vedpal Deep. This poem, An Evening Wet with Rain, is the expression of the poet. In this poem, the poet expresses the sadness and hopelessness as he walks through a lane on an evening wet with rain. The memories of his childhood comes into his mind. He remembers those carefree days when he was not burdened with worries, anxieties, and responsibilities. Suddenly he remembers and he recalls the cheerful occasion when he stood alone in the courtyard, listening to the sound of cymbal. But today he has fallen upon the thorns of life, so he beckons the hands of his companion to take him along. He is in no hurry to quicken his steps because he knows that light of an earth lamp in a modest inn on the side of the road awaits him. इस पोएम में शायर वेदपाल देव एक ऐसी ही शाम को याद करता है जब बारिश हो रही थी और सारी फिजा खामोश थी. शायर उदास है, उसकी ज़िंदगी में अंधेरा है. उसे अपना बचपन याद आता है जब वो सहन में बारिश के शोर से लुत्फ़अंदोज़ होता था. इसके दिल में ठेस उठती है. उसे अफसोस होता है कि जो टाइम है, जो वक्त है, और वो वक्त जो गुजरा हुआ ज़माना कभी वापस नहीं आता. The days gone by do not come back, and this was something about the whole introduction of the whole poem. Now, directly I'm going to read the texts of this poem. Stanza first. An evening wet with rain, as I walk through the lane, the heart beckons the hands to hold them with love. The mind also knows subtle signals of the breeze. Should I stand on the ground or waft with the wind? Now, in the second stanza, windows, doors, awnings of the houses are wet. Cool breezes stir the leaves of the yonder banyan tree. The collar of my coat is also wet with drops of rain. All around rain silence. Dear students, in the first stanza, the poet Vedpal Deep tells us that he says that an evening wet with rain as I walk through the lane. He says that, and he recalls the period. In this first stanza, he says that it is an evening that is wet with rain. An evening wet with rain as I walk through the lane. He says that an evening that is wet with rain, the poet is walking through a lane. एक शाम
एंड एक शाम थी जो वेट थी, गीली थी बारिश से. उसके कहने का मतलब है कि बारिश हो रही होती है और जो पोइट है वेदपाल देव वो चल रहा होता है. एज आई वॉक थ्रू द लैंड, किसी रास्ते से वो गुजर जाता है एक ऐसी शाम में जिसमें बारिश की वजह से हर चीज़ गीली हो चुकी है. शायर एक गली से गुजर जाता है, चला जा रहा है. The heart beckons the hands to hold them with love. The mind also knows subtle signs of the breeze. Should I stand on the ground or waft with the wind? The poet says that when I was walking through the land, everything was wet due to rain. हर चीज़ बारिश की वजह से गीली हो चुकी थी. शायर एक गली से गुजर जाता, उसके साथ एक दूसरा साथी भी था. द हार्ट बेकनस, उसका दिल उसको इशारा करता है. बेकनस मीनस इशारा. यहाँ मैंने एक डिफिकल्ट वर्ड्स के माने बुक पे ही लिखे हैं. द हार्ट बेकनस, उसका दिल जो है वो उसको इशारा करते हुए बुलाता है. द हार्ट बेकनस, क्या उसका हार्ट जो है वो उसको क्या इशारा करता है. द हैंड्स टू होल्ड देम विद लव, जो उसके साथ उसका कंपेनियन होता है, उसका दिल उसको इशारा करता है कि आप इसके साथ, इसका दिल ये चाहता है कि इसका साथी प्यार से उसका हाथ पकड़ ले. द माइंड ऑल्सो नोज सबटल साइंस ऑफ ब्रीज, उसका मन जो है उसका दिल और दिमाग दोनों ही कमज़ोर हो चुके हैं. उसका मन चाहता है कि सिर्फ एक हल्की सी हवा ही चल रही है. द माइंड ऑल्सो नो द सबटिल मीन्स नाजुक या हल्की या मामूली जो ब्रीज जिसको हम बोलते हैं, जो हवा है. द माइंड ऑल्सो नो सबटिल साइंस ऑफ द ब्रीज, और जो मेरा उसका दिल और दिमाग है उसका मन जानता है कि सिर्फ एक हल्की हवा ही चल रही है. Should I stand on the ground or waft with the wind? तो पोएट जो है वो चाहता है कि should I stand, so he can't decide whether he should stop walking or keep going. Wafting with the wind, वो ये नहीं जानता है कि वो ये फैसला नहीं कर पाता है कि उसे चलना चाहिए या उसे चलना. शुड स्टैंड, उसको वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको लग रहा है कि मामूली सी हवा चल रही है, अदरवाइज कि बारिश की वजह से हर चीज़ गीली हो चुकी होती है. शुड स्टैंड, अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है. शुड स्टैंड, क्या मैं चलना बंद करूं या एक ही जगह रुकूं. शुड स्टैंड ऑन द ग्राउंड और वेफ्ट विद द विंड, क्या मैं चलना बंद करूं या हवा के साथ साथ हिचकोले खाते हुए मैं आगे चल जाऊं. Below are some pictures related to this poem, this one and this one. Now I am going to read the text of second stanza. That windows, doors, awnings of the houses are wet. Windows, doors, awnings of the houses are wet. The poet says that due to heavy rain in that evening, windows एंड डोर्स, जो हर बारिश की वजह से जो हर चीज़ गीली हुई होती है, खिड़कियाँ, डोर्स, दरवाजे जो थे, एवनिंग्स मीन्स जो टेंट वगैरह लगाते हैं हम, चाहे साइबान जिसको हम कहते हैं, आप द हाउसेज आर वेट. हर एक चीज़, चाहे विंडो थी, डोर था, एवनिंग्स थे, घर के हर एक चीज़ वेट हो गई थी, गीली हो गई थी. किस चीज़ से? बारिश की वजह से. कूल ब्रीज स्टिर द लीव्स ऑफ यॉन्डर बनियान ट्री, जो हल्की सी हवा चल रही थी, जो हल्की सी हवा चल रही. शायर को कुछ दूरी पर एक वो क्या दिखाई दे रहा था, बनियान ट्री, जिसको हम बरगद कहते हैं, बरगद का पेड़ उसको दिखाई दे रहा है. उसको लग रहा है कि ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो इस बनियान ट्री को, बरगद के पेड़ को, स्टिर मीन्स हिलाना,
وہ اس یونڈر بنیان ٹری جو ہے اس کو وہ ہلاتی ہے. اسٹر مینس ہلانا. جو کول بریز ہے, جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے, ان ہواؤں کی وجہ سے جو بنیان ٹری ہے, برگد کا جو پیڑ اس کو دوری پر دکھائی دے رہا ہے, اس کو لگ رہا ہے کہ ہواؤں سے وہ بھی ہل رہے ہیں. ان کے پتے جو ہے, ان کے لیوز جو ہے, وہ بھی اس ان ہواؤں سے ہل رہے ہیں. اس کے پتے بھی ہواؤں سے ہل رہے ہیں. The collar of my coat is also wet with drops of rain. The bird says that the collar of his coat. شاعر کہتا ہے کہ پوئٹ کہتا ہے, شاعر کہتا ہے, وید پال دیپ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے کوٹ جو ہے, اس کا کوٹ جو تھا, اس کوٹ کا کالر بھی ویٹ ہو گیا تھا. دا کالر آف مائی کوٹ از آلسو ویٹ. وہ بھی ویٹ ہو گیا تھا, گیلا ہو گیا تھا. ود ڈراپس آف رین. کس چیز سے؟ بارش کے کچھ بوندیں جو گرے, ڈراپس آف رین, بارش کی جو بوندیں اس پہ پڑ گئی, تو اس کی وجہ سے جو اس کو کوٹ لگا کر تھا, اس کو کپڑے جو لگا کر تھے, اس کا کالر بھی گیلا ہو گیا. آل اراؤنڈ رین از سائلنس. تو اس کو یہ لگ رہا ہے سبھی طرف خاموشی چھائی ہوئی اس کو دکھائی دے رہی تھی, کیونکہ یہ وہ شام تھی جب ہر طرف اس کو کیا دکھائی دے رہا تھا کہ ہر طرف جو ویٹ ہو گئی تھی. کس سے؟ بارش کی وجہ سے جو گیلی ہو گئی تھی. بارش کی وجہ سے جو ہر طرف ہر ایک چیز گیلی لگ رہی تھی, گیلی ہو گئی تھی. شاعر یہاں اس پوئم میں اس شام کی تصویر کشی کرتا جب بارش ہر جگہ بارش کی وجہ سے ہر چیز گیلی ہو چکی تھی, اور وہ کسی ان گلیوں سے گزر جاتا تھا, تو اس کا دل کیا کر رہا تھا, وہ اشارہ کرتا تھا کہ وہ اپنے کسی ساتھی کا ہاتھ پیار سے اس کا ساتھی اس کا ہاتھ پکڑے. So dear students, this is all about today's lecture. Thank you. Have a nice day.